Hello, my dear students. I Rahul Mishra, and today we are going to discuss Thomson's atomic model. Thomson's atomic model. So listen here. We all know that atomic models are given to know the structure of atom. Atomic models are given to know the structure of atoms. So first atomic model was Thomson's atomic model, and according to this model, listen here, electrons are embedded in positively charged sphere. Electrons are embedded in positively charged sphere, or we can say positively charged part, as same as seeds are embedded as same as seeds are embedded in watermelon, as same as seeds are embedded in watermelon. It means इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्ट में उसी तरह धसे हुए होते हैं जैसे वाटरमेलन में सीड्स धसे हुए होते हैं। वाटरमेलन में सीड्स धसे हुए होते हैं। सो दिस मॉडल, listen here, it is very important. So this model is also called as watermelon model. इसीलिए इसे watermelon model भी कहा जाता है। Now listen, this model was first model or first atomic model. This model was first atomic model and it is given by Thomson in 1904. In 1904. तो ये पहला एटॉमिक मॉडल था जिसको थॉमसन ने 1904 में दिया था। नाउ लिसन, दिस मॉडल एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम। इट मींस यह मॉडल एटम की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन करता है। बिकॉज ऑफ देयर इज पॉजिटिवली चार्ज एंड देयर इज इलेक्ट्रॉन एंड दे live together, so there will be neutral charge, completely neutral charge. It means atom is completely neutral. So listen here, this model is also called as plum or raisin pudding model. This model is also called as plum or raisin pudding model. So plum means बेर, पुडिंग मीन्स बेर का पेस्ट या बेर का हलवा। इट मीन्स वी ऑल नो अबाउट प्लम। हम लोग बेर को जानते हैं। बेर में जो वाइट पेस्टी सब्सटेंस होता है, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। एंड लिसन, द सीड प्रेजेंट इन प्लम और बेर is acts as electron. It means it is some like plum pudding. It is some like plum pudding. So this model is also called as plum or raisin pudding model. Raisin means kismis. Raisin means kismis. Now listen, what are the limitations of this model? Listen, there are some certain limitations of this model also. This model could not explain extra stability of an atom, and this model does not explain spectra of an atom. It means ये atom किसी atom की stability और उसके स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर सका। सो लिसन, दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस मॉडल. So this model get
failed. Now, next scientist had come, and he was Rutherford. He performed their alpha scattering experiment. So listen here. Next scientist after Thomoson, Rutherford had come, and he performed an experiment in which he bombarded some alpha particles on thin gold foil. So listen here. It means थॉमसन के बाद अगले साइंटिस्ट रदरफोर्ड आए और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने थिन गोल्ड फॉइल मीन्स सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार कराई. दिस सर्कुलर पार्ट इज ऑफ थिन गोल्ड फॉइल. सो लिसन, राइट डाउन इट. थिन गोल्ड फॉइल. This is thin gold foil. Now this thin gold foil Rutherford observed when he bombarded some alpha particles onto this thin gold foil. He observed that some alpha particles crossed this thin gold foil and some alpha particles goes in a straight line path. So he observed, he concluded from this point most of the part of the atom is hollow. It means रदरफोर्ड ने देखा कुछ अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में बिना किसी डिफ्लेक्शन के निकल गए और सोने की पतली पन्नी को क्रॉस कर गए. देन ही ऑब्जर्व दैट, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, the most of the part of nucleus is hollow. It means परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है. Now second thing, he saw that some alpha particles get deflected at certain angle theta from their original path. It means कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ थीटा एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए, मीन्स अपने मार्ग से विचलित हो गए. कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर. सो लिसन, ही saw that some deflect at less than 90 degree angle, and some very few deflected at greater than 90 degree angle. So greater than 90 degree angle, it means some like this. Deflection will be some like this, and angle will be some like this will be 90 and this will be greater than 90. It means this total angle will be greater than 90. So listen here, this type of deflection is the deflection in which angle is greater than 90. So due to deflection of alpha particle onto thin gold foil, Rutherford concluded, next point, that the center of atom contain a positively charged part
due to which there is some deflection. It means जो एटम का सेंटर है वहाँ पर कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है जिसके कारण ये डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है. So this deflection is due to some positively charged part present on the center of nucleus. So this type of deflection occurs due to this reason. Now next point, Rutherford observed that some alpha particles return back to their original path. It means कुछ अल्फा पार्टिकल जो है अपने ओरिजिनल पाथ पर वापस लौट गया. सो रदरफोर्ड वॉज कंक्लूडेड दैट, तो रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज रिजिड and highly dense. It means रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया कि जो एटम का सेंट्रल पार्ट है वो हाईली डेंस है, रिजिड है. एंड लिसन, दिस सेंट्रल पार्ट कंसिस्ट होल मास ऑफ द एटम. And he said that this part is called as nucleus. तो रदरफोर्ड ने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल अपने ओरिजिनल पाथ पर वापस लौट गए. तो रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला या ये रिजल्ट दिया कि एटम के सेंटर पर हाईली डेंस पार्ट है जहां पर एटम का पूरा भार कंसंट्रेटेड है. सो लिसन, दिस हाईली डेंस पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस. ये सेंट्रल पार्ट क्या कहलाता है? न्यूक्लियस. सो नाउ लिसन, दिस वाज योर रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. And listen. Now listen. We can study it from here also. Ernest Rutherford carried out an experiment in which he bombarded some alpha particles onto a thin gold foil, and he observed that. सो लिसन, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने कुछ अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया थिन गोल्ड फॉइल पर और उन्होंने ऑब्जर्व किया मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स अप्रॉक्स 90% ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ एंड क्रॉस द थिन गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डेविएशन. इट मीन्स कुछ अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ में बिना किसी डेविएशन में थिन गोल्ड फॉइल को पार करते हुए निकल गए. ऑन दिस बेसिस इट मीन्स इस आधार पर रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज हॉलो. रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया कि एटम का अधिकांश भाग खोखला है. नाउ सेकंड पॉइंट, some alpha particles deflect at a certain angle theta which is greater or less than 90. It means कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए. ये एंगल 90 से कम भी हो सकता है, 90 से ज़्यादा भी हो सकता है. ऑन दिस बेसिस, इस आधार पर रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट एटम हैज स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर. जो हमारा एटम है उसका सेंटर हाईली डेंस है और पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है. नाउ सम अल्फा पार्टिकल रिटर्न बैक टू देयर ओरिजिनल पाथ. कुछ अल्फा पार्टिकल अपने ओरिजिनल पाथ पर वापस लौट गए.
On this basis, इस आधार पर Rutherford concluded that central part of an atom is rigid, highly dense and positively charged, where whole mass of the atom is said to be concentrated. This central part is called as nucleus. रदरफोर्ड ने बताया कि जो एटम है वो हाईली डेंस है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, जहाँ पर एटम का समस्त भार निहित है और whole mass of the atom is said to be concentrated here, and this central part is called as nucleus. और ये एटम का जो सेंट्रल पार्ट है इसको न्यूक्लियस कहा जाता है. So listen, Rutherford gave some condition between number of alpha particle to the sin to the power theta by 2, and he told that number of alpha particle is inversely proportional to 1 upon sin की power 4 theta by